Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are very well. And as I say, you are practicing very well. Yeah, that is something very important, and you have to do all the time. And as exams are going on, and definitely you've been preparing, you've been taking your exams, and there is possibility that you are getting less time in terms of practicing, in terms of watching these videos, in terms of learning what we've been learning in these classes. So it's okay because your exams are also important and you have to score very well in your exams. So that is okay, but you can take out 10 minutes, 15 minutes, right? And that is enough because if you are able to take out 10 minutes, 15 minutes on daily basis and you are doing something in sense that you are thinking something, you are talking about some topic, or maybe if you have friends, you are um, doing some activity, right, with your friends or with your family members. What kind of activity? Activity related to say something about some topic, or maybe asking questions, or maybe they ask you some questions, you ask them some questions, and related to different situations, and that is enough for practice. But the point is that you have to make sure, you have to try that you are doing on regular basis, because see, the point is that it's all about getting into the habit of using the language. So more you get into the habit, and that's how you get into the habit, because when you do something on daily basis, you are repeating sentences, because when you think about something, when you talk about something, there is possibility that you will repeat some sentences will be repeated. So when you are repeating things, it means you are practicing. It means that you are getting into the habit. You are habitual of thinking, of making sentences. And once you make sentences, right, on daily basis, then you don't have to think, right? They come naturally, they come comfortably. So this is all about being comfortable. This is all about making sure that you speak in a natural way. Now, when we talk about natural way, when we talk about a comfortable manner, it's all about that you are not doing the translation. You are not taking the help of Hindi a lot. So for every sentence, for every question, you are not first thinking in Hindi and then translating that from Hindi to English. And when you are talking to someone, so you listen to that person, and then first you try to translate it in Hindi, and then you think of English sentence, and then you translate it in from Hindi to English, and then you speak. So it's a long process, right? So it's a long process. In the starting or with some difficult sentences, you can do like this, you can take the help, but you have to make sure that you have to stop doing it. Okay, and how will you do that? You will do that slowly. You will do that gradually. You will do that by practice. So जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कैसी प्रैक्टिस करेंगे? टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश। एंड ये आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि नेचुरली आ जाएगा। जब तक आप ऐसे कोशिश नहीं करेंगे दैट यू आर नॉट डूइंग द ट्रांसलेशन, जब तक थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं दैट नो आई डोंट हैव टू डू द ट्रांसलेशन, आई हैव टू मेक अ क्वेश्चन डायरेक्टली. So think directly in English. For example, if you want to ask someone, where are you going? So without thinking in Hindi, आप कहाँ जा रहे हैं, पहले हमने ऐसे सोचा फिर उसको ट्रांसलेट किया. नो, दैट इज नॉट ओके. सो यू नो दैट व्हाट डू यू वांट टू आस्क, राइट? एज ए स्पीकर आपको पता है आप क्या पूछना चाहते हैं. use that question directly. Where are you going? Okay. Where do you have to go? Okay. What do you do in the morning? Right. When did you come back yesterday? So what are you doing? You are asking question directly without thinking in Hindi, without taking the help of translation. In the same way, if you are practicing with your friends, okay, when they ask you a question or when they talk about some particular topic or something, try to
talk about that particular topic, or if you want to say something, try to do that directly in इंग्लिश विदाउट थिंकिंग इन हिंदी. सो यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि ये जो थिंकिंग है हिंदी में, पहले सोचने की जो थिंकिंग है या हैबिट है, बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि पहले हमने हिंदी में सोच लिया, फिर उसको ट्रांसलेट कर लिया. स्टार्टिंग में इजी लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, राइट, कैसे कॉन्वर्सेशन, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, वहां पे यू विल फेस डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ थिंक, क्योंकि उन रियल सिचुएशंस में आपको इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. Right, so if someone asks you a question, what did you do yesterday, so you have to, after listening the question, you have to give the answer as quickly as possible. So वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम पहले ट्रांसलेट करें कि मैं यहाँ गया था, फिर हमने पॉज ले लिया, फिर हमने सोचा कि अब ये सेंटेंस जो बोल रहे हैं कि मैं उनसे मिला था, कैसे यूज करेंगे सेंटेंस कि आई मेट देम. राइट, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. एंड किसी के भी साथ हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो वहाँ पे अगर इतने पॉजेज आएंगे तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा कॉन्वर्सेशन में. ऐसा लगेगा कि ओके, दिस पर्सन, दोनों चीजें हो सकती हैं वहाँ. यहाँ तो ऐसा लगे कि ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है कॉन्वर्सेशन में, बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पॉजेज आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजेज आ रहे हैं, सोच रहे हैं हम. या उनको ऐसे लगेगा दैट दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, राइट, दिस पर्सन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चंस, और मे बी टू आस्क द क्वेश्चंस. सो देन दैट person will switch to Hindi, right? Or will switch to any other language where you are comfortable with that language. So that's why it's important कि हैबिट हम धीरे धीरे डालें. एंड देखेंगे आप, ये जब आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ थिंकिंग दैट वे, राइट. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट somewhat in the starting you will find it difficult if you are, if you do the translation a lot, वहां पे ज्यादा डिफिकल्टी होगी. ओके, सो ये कोशिश करना है कि हमको ट्रांसलेशन कम से कम यूज करना है. ओके, सो ये भी एक टास्क है, राइट, बिकॉज सी, इफ आई आस्क यू to say something about television, right? So now here you don't have a question. Okay, you have only one word. What is that word? TV or television. Now you have to think about this term, television, TV. So whatever you want to say, you have to say. And for that, you have to quickly think in Hindi. Okay, what can I say? What can I talk about television? राइट. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने जल्दी आपके थॉट्स आ रहे हैं, राइट, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का तो मौका मिलेगा नहीं, राइट. यू कैन ओनली थिंक फॉर 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट. सो जब आप स्टार्ट होंगे, सो वहाँ पे स्टार्ट मतलब फ्लो में सेंटेंसेस फिर आना चाहिए, right? So, for example, if someone asks you that, what do you want to say about television? राइट, सो व्हाट, यू कैन से एनीथिंग. अब ये आपकी ओपिनियन है कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आपके व्यूज हैं, राइट, जो भी आप बोलना चाहते हैं. सो यू कैन से दैट फॉर मी television is a source of entertainment. A lot of people watch television. A lot of people watch different things on television. They watch serials, they watch different shows. Some people watch sports on television. So I think that television is very, very important for some people in terms of entertainment. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, and then you are saying, you are talking about television, right? So I also watch television, and mostly I watch cricket matches on television. I watch IPL on television because for me that is very interesting, right? I am interested in watching cricket. So whenever there is a match, or whenever there is some sort of sport, I really like watching that on TV. So that way I watch TV, and then you can say something else also, right? ये तो देखिए पूरा स्पीकर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसको क्या यूज करना है, क्या बोलना है, right? I'm just giving you example. In the same way, you have to see that what do you want to say. आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे, right? What will you say? For example, you can talk about other people also. You have different
people in your family, you can also mention them. For example, my father doesn't watch TV. He doesn't like watching TV. Particularly, he doesn't like watching TV serials, right? Those boring TV serials. For some people, those serials are very interesting, but for my father, those serials are not very interesting. So that's why he doesn't like watching TV. But my mother, right, she likes watching TV a lot. And those serials, she is very interested in those serials. So she watches all those serials on daily basis. देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल से क्या हो रहा है कि somebody asks you question about television and then you are trying to say a lot of things about television. This will happen when you are comfortable with the sentences, when you know what you want to say, and most importantly, when you are not doing the translation. राइट सो देखिए इस सिचुएशन में ट्रांसलेशन अगर हमारी हैबिट होगी सो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक राइट क्योंकि हम हर बार तो हर सेंटेंस में तो सोचेंगे नहीं राइट वहाँ पे पॉज नहीं लेंगे ट्रांसलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है चाहे 5 सेकेंड्स लगें लेकिन लगेंगे तो pause तो आएगा so that's why you have to get into the habit of speaking directly without taking the help of translation. This is very important, right? And यहाँ पे ये जो example आया टीवी वाला इस example में एक और important point है that your thoughts समथिंग दैट यू वांट टू से वो भी क्लियर होना चाहिए बिकॉज ऐसे भी आप देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन आया व्हाट यू वांट टू से अबाउट टेलीविजन अब जैसे ही क्वेश्चन सुना वहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू से what not to say क्या बोले क्या नहीं बोले right so you have to get into the habit of this kind of practice also okay and how will you do that in the same way as I gave you the example of TV you will also choose some easy topics, right? Topics where you can say something, where you know something, right? That you can talk about, right? TV is an easy topic, right? Where you can make some sentences, okay? So that's what you have to do, right? To make sure that ये जो thoughts हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं, because thoughts are there, right? So जो भी thoughts हैं, you are able to express yourself. So expressing yourself with the help of sentences. एक तो पार्ट हो गया कि sentences होना जरूरी है, correct sentences होना जरूरी है, and दूसरा important part जो है express yourself. And वो कब express करेंगे? When you have some thoughts, when you know what to say. what to talk about right ये भी तो मालूम होना जरूरी है कि क्या बोलना है कैसे बोलना है right कैसे बोलना है तो सेंटेंसेस आर देयर बट क्या बोलना है उसके लिए तो हमारे थॉट्स होना जरूरी है हमको पता होना चाहिए कि दैट आई वांट टू से दिस आई वांट टू से दैट जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया सिंपल सेंटेंसेस बनाए हमने राइट टीवी से रिलेटेड एंड कितने सारे सेंटेंसेस आ गए यूजिंग सिंपल सिचुएशन यूजिंग हमने कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यूज नहीं किया कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज नहीं किया लेकिन फिर भी सेंटेंसेस आए सो ये दिस is about getting into the habit of thinking and using sentences. So you can choose your own topics, right? You can choose like TV, you can choose mobile phones, you can talk about mobile phones, you can talk about shopping malls, you can talk about playgrounds, you can talk about your school, your friends, there are so many easy topics. So you choose any one topic and then you say something, record yourself, and once you are finished, then listen back, okay? And then see what you said, how you said, okay? Pay attention to your thoughts, pay attention to your sentences. धीरे धीरे इसकी भी हैबिट हो जाएगी लेकिन उसके लिए अगेन ये आपको ट्राई करना पड़ेगा प्रैक्टिस सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस ओके सो धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस का प्रैक्टिस की जो बाउंड्रीज हैं वो आपको बढ़ाते रहना या आप प्रैक्टिस में ये भी इंक्लूड कर रहे हैं ये भी इंक्लूड कर रहे हैं राइट सो धीरे धीरे ये जैसे जैसे बाउंड्रीज आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंफर्ट लेवल कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे आपका जो लेवल है वो पुश होता रहेगा लेवल अप होता रहेगा राइट सो यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स ओके सो दैट्स व्हाई practice there is no shortcut right practice is the only solution so that's why in all these classes I talk about practice a lot because ये बात हमको अच्छे से ध्यान में रखनी है that it is not about memorizing
कोई भी चीज मेमोराइज करना नहीं है। कोई भी चीज ये नहीं सोचना कि हमने याद कर लेना है and याद करने के बाद वो हो जाएगा। नो, दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। After understanding, you have to make sure that you are using those things a lot, right? When you use them, you understand in a better way, and then there comes the clarity, there comes the confidence, right? There you know that I know something and I'm able to use that thing properly, right? ओके, सो अभी हम क्या करेंगे आज की क्लास में? ओके, ये सारी चीज़ें तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। एंड ये जो एग्जाम्पल्स आते हैं ये आपको करते रहना है, अपने तरफ से एफर्ट्स लगाते रहने हैं। लास्ट क्लास में जैसे हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स, राइट? सो हमने वहाँ पे देखे कि कितने सारे मॉडल वर्ब्स हैं दैट वी यूज टू टॉक अबाउट समथिंग where we want to give the clear message, जहाँ पे हम clear message देना चाहते हैं, अपने listener को ये समझाना चाहते हैं कि what do we think in terms of talking about probabilities, possibilities, request, advice, suggestion, permission, right, and blessings. All these things are there. And when we talk about these things, all right, we use modal verbs. And जैसे लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, कैन, कुड, मेक ए, के तीनों सिचुएशंस में, हर सिचुएशन में हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। कैन की प्लेस पे कुड यूज हो सकता है, कुड की प्लेस पे मे यूज हो सकता है, बट विथ लिटिल डिफरेंस। सो वो लिटिल डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, एंड ध्यान में रख के देन यू हैव टू यूज। सी, अगेन ये जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड के कब कहाँ पे यूज होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आपको वो सेंटेंसेस सोचना है, थोड़े से एग्जाम्पल्स ट्राई करना, तब आपको जाके क्लैरिटी होगी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मुझे वहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, राइट? जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैन भी यूज हो जाएगा, कुड भी यूज हो जाएगा, मे भी यूज हो जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, राइट? क्या सोच रहा है इन द सेंस कि व्हाट इज द परसेंटेज, जैसे हमने परसेंटेज की बात करी थी लास्ट क्लास में, दैट, राइट? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या यूज करना है, हम परसेंटेज का ध्यान रख सकते हैं कि we use can for 100%, we use could for 50%, and then we use may for 25%, right? So that way you can see that some sort of clarity is there where to use what. So could जो है वो थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी के लिए है, मैं उससे भी कम, और कैन जो है स्ट्रांग है। परमिशंस में भी सेम रहेगा, राइट? रिक्वेस्ट में भी सेम रहेगा, पॉसिबिलिटीज में भी, प्रोबेबिलिटीज में भी। तो ये सब सेंटेंसेस आप उससे सोचिए, एंड वहाँ पे जब आप कैन की प्लेस पे कुड यूज करेंगे, कुड की प्लेस पे मे यूज करेंगे, तो वहाँ पे आप ये देखिए कि आपका क्या इंटेंशन है, आपका क्या इंटेंशन है behind using that sentence. If you are saying that you may go to the market, why are you saying, why do you want to say you may go to the market? Because you think that it's your choice, right? It's your choice. So you may go to the market, you are thinking about 25%. You can go to the market, right? You are using that 100%, right? Possibility, you can go to the market, you are giving the permission, राइट? यू कैन गो टू द मार्केट। सो वहाँ पे परमिशन भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, राइट? रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आप इनको यूज करके देखेंगे सेंटेंसेस को, राइट? सो जो जब क्लैरिटी आएगी। सो यहाँ पे मॉडल वर्ब्स जो हैं, कैन, कुड, में, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, थोड़े से एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा हमने कि कैसे कहाँ पे क्या यूज करना है, राइट? एंड वहाँ पे हम एरियाज भी देख रहे हैं कि क्या एरियाज हैं, किस तरह से मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं, क्या वो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। तो अबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, परमिशन है, रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी है, ये सारे पॉइंट्स आप यूज करेंगे, क्योंकि ये तो डिपेंड आपके ऊपर करेगा ना कि कहाँ पे आपको क्या यूज करना है। आप अबिलिटी की बात कर रहे हैं, या आप परमिशन की बात कर रहे हैं, या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितना पोलाइट हो रहे हैं आप, राइट? तो कितना पोलाइट हो रहे हैं, जैसे आप यूज कर रहे हैं कैन आई हेल्प यू विथ योर फ्रेंड, ओके, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, एंड आप वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन आई हेल्प यू।
कुड आई हेल्प यू पोलाइट हो गए, मे आई हेल्प यू और पोलाइट हो गए, राइट? दैट वे यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे हम ये देखें थोड़े से एग्जाम्पल्स के में पॉसिबिलिटीज में यूज हो रहा है, रिक्वेस्ट में यूज हो रहा है, प्रोबेबिलिटीज में भी यूज हो रहा है, राइट, परमिशन में भी यूज हो रहा है, में उसके अलावा में ब्लेसिंग्स में, विशेस में भी यूज होता है, राइट? एंड ब्लेसिंग्स में, विशेस में हम मेजरली मे को ही यूज करते हैं। मे के अलावा हम कोई मॉडल वर्ब यूज नहीं करेंगे जब हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी को विशेस दे रहे हैं। ओके, वहां पे हम सिर्फ मे यूज करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, राइट? मे हर सोल रेस्ट इन पीस, मे ऑल ऑफ योर विशेस कम ट्रू। ऐसे हम ब्लेसिंग्स देते हैं ना, जैसे ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो वहां पे हम मे यूज करके विशेष देते हैं। जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, राइट? मे गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी जो विशेष हैं, इच्छाएं हैं, पूरी हो जाएं, मे ऑल ऑफ योर विशेष कम ट्रू, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिकॉज आप विशेष दे रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप मे से सेंटेंस स्टार्ट करें। यहाँ पे मे का कुछ सेंस नहीं निकलेगा, राइट? मे का कुछ सेंस नहीं निकलेगा, यहाँ पे सेंटेंस सिंपल आएगा कि आपकी सारी विशेष ट्रू हो जाए, मे ऑल ऑफ योर विशेष कम ट्रू, मे गॉड ब्लेस यू, राइट? गॉड आपको आशीर्वाद दे। सो मे का यहाँ पे कुछ सेंस नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है दैट वी यूज मे फॉर ब्लेसिंग्स, फॉर विशेस, राइट? सो दैट वे वी यूज मे। सो मे का एक और रोल है जो विशेस में यूज होता है, ब्लेसिंग्स में यूज होता है, राइट? सो आपको अब ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि मैं जो है वो ब्लेसिंग्स में भी यूज हो रहा है, पॉसिबिलिटीज में भी यूज हो रहा है, रिक्वेस्ट में भी यूज हो रहा है, कैन भी यूज हो रहा है, कुड भी यूज हो रहा है। कहाँ पे क्या यूज होना है वो डिपेंड करेगा आपके थॉट्स के ऊपर, कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, राइट? सो डिफरेंसेस समझने के बाद जब आप एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, वहां पे और क्लैरिटी आएगी। सो क्लैरिटी लाने के लिए इट इज important दैट यू हैव टू थिंक ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स। व्हेन यू थिंक ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स एंड देयर यू ट्राई टू यूज can, could, may, right? There you understand in a better way that what is the meaning, what is the sense coming out from that sentence. Difference तो आपने समझ लिया है, क्या difference है? Simple सा difference है, right? Which is all about 100%, 50%, 25%. And then we use may in one more situation. We use only may here in this situation. यहाँ पे हम can, could यूज नहीं करेंगे, ओनली may यूज करेंगे। कहाँ पे? जब हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, हम विशेष की बात कर रहे हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बोलना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू राइट दिस एग्जाम्पल, मे यू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। ये आपको किसी ने विश किया, राइट? कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। मे यू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स, मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन इन योर एग्जाम्स। तो कोई आपको विश कर रहा है, राइट? कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, राइट? उस सेंस में हम मे यूज करते हैं, एंड मे हम स्टार्टिंग में ही यूज करते हैं, राइट? जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं, हमारे एल्डर्स, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, राइट? यूज करते हैं, आप बहुत बहुत जिए, आप बहुत लंबा जिए, आपकी उम्र लंबी हो, सो मे यू लिव लॉन्ग, राइट? आशीर्वाद दे रहे हैं, वहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हम, मे यू लिव लॉन्ग, राइट? सो दैट वे आप अपने छोटों को जब ब्लेसिंग्स देंगे, विशेस देंगे, सो यू विल डू द सेम वे, राइट? जब आपके एल्डर्स, आपके सीनियर्स आपको विश करेंगे, दे विल ऑल्सो डू द सेम, राइट? सो में हम यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट में, ब्लेसिंग्स में, विशेस में,
पॉसिबिलिटीज में, प्रोबेबिलिटीज में, हर जगह यूज हो रहा है। तो कहाँ कहाँ किन एरियाज में यूज हो रहा है, जब आप ये यूज करके देखेंगे, जब आप कुछ पार्ट रीड करेंगे वहां पे इन तरह के सेंटेंसेस आएंगे, तो वहां पे आपकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम। अ, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। I want to write, may he progress by leaps and bounds. ओके, बिकॉज इस तरह का भी एग्जाम्पल काफी यूज होता है, इस तरह के भी ब्लेसिंग्स काफी मिलती हैं, राइट। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, राइट। सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमको पता है सब्जेक्ट कुछ भी है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो कहीं पे भी एस ई एस नहीं लगना है मॉडल वर्ब्स में, राइट। चाहे वो सिंगुलर की बात हो रही हो, प्लूरल की बात हो रही है। सो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे मे ही प्रोग्रेसेस, नो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ओके, सो व्हाट इज द सेंटेंस कमिंग, व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग someone is trying to give? May he progress by leaps and bounds. Now, by leaps and bounds, this is a phrase है ये, and इसका मीनिंग है by leaps and bounds, दिन दुगनी रात चौगनी। So when you think about this statement, दिन दुगनी रात चौगनी, so you will take the help of by leaps and बाउंस, में ही प्रोग्रेस, वो दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस करे, आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है, राइट। वो इतने अच्छे काम करे, वो इतने अच्छे से पढ़े, इतने अच्छे से जॉब करे, दैट ही दैट ही मे प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, राइट। वो इस तरह से लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी वो प्रोग्रेस करे, राइट। सो समवन uh, giving the blessing, right? So that way you have to use may in blessings. Okay, with the help of these examples, this is, I think, somewhat clear how to use may in blessings. Okay, अब आप खुद अपने एग्जाम्पल सोचेंगे, राइट, कि हम ब्लेसिंग्स में क्या यूज कर रहे हैं, किस तरह से सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। थिंक ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स एंड just understand that may is also used in blessings, and the way we have to use may, we have to use this way, right, as we have used in these examples. Okay, क्लियर, आई होप। देखिए, थोड़ा सा मॉडल्स जो हैं वो ट्रिकी हैं, ट्रिकी इन द सेंस, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि काफ़ी जगह काफ़ी सारी सिचुएशंस में यूज़ हो रहा है, राइट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है ये, कि यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, कैन, कुड, में, हर जगह एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड वो, लेकिन जो रिप्लेस कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन में डिफरेंस है, राइट। वहाँ पे पॉसिबिलिटीज कम हो रही हैं, प्रोबेबिलिटीज कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं, राइट। सो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, एंड यू हैव टू यूज द सेम वे, राइट। एंड फिर जब थोड़ा सा हैबिट हो जाएगी, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ पे कैस को क्या यूज करना है, क्यों यूज करना है। वंस यू अंडरस्टैंड that these are the areas where we use these terms, these are the situations where we use these terms, then you will use that naturally, comfortably. बट इन द स्टार्टिंग थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट जैसे ही आप अपने एग्जाम्पल्स यूज करेंगे एंड एग्जाम्पल्स यूज करते वक्त आप ध्यान देंगे, इट विल बी इजियर फॉर, राइट, इजी हो जाएगा। ओके, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप एग्जाम्पल्स यूज करें। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल्स यूज करें। चलिए, इसी लिस्ट में अब हम एक और मॉडल वर्ब ऐड कर लेते हैं, एंड थोड़ा सा और कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। कंफ्यूजन इन द सेंस कि अब हमारे पास एक और ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे हम उसको भी यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज माइट। माइट भी हम पॉसिबिलिटी, परमिशन, एडवाइस में, रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं, राइट। अब जो माइट है वो थोड़ा सा और वीक है, थोड़ा सा और कमजोर है, राइट। सो लेट्स से कि हम माइट को 10% बोल देते हैं। ओके, सो अब माइट जो है वो और वीक हो गया। जितने भी यहाँ पे ये सेंटेंसेस हैं, राइट, यहाँ पे इन हर सेंटेंस में हम माइट की प्लेस पे कैन यूज कर सकते हैं, विद द चेंज, राइट। जो हमारा इंटेंशन होगा, जो थॉट होगा, राइट, उसके अकॉर्डिंग हम कैन यूज कर सकते हैं, कुड यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस में, राइट। बिकॉज कैन, कुड, मे
सारे ही पॉसिबिलिटीज में यूज होते हैं, परमिशन में यूज होते हैं, एडवाइस में यूज होते हैं, रिक्वेस्ट में यूज होते हैं, राइट। सो इन द सेम वे यहाँ पे हमारे पास फोर ऑप्शंस है, राइट। इन फोर ऑप्शंस में एक मेजर डिफरेंस क्या है, अबाउट परसेंटेज, राइट। एंड व्हाट इज दैट, राइट, व्हेन यू आर 100%, राइट, व्हेन यू आर 50% श्योर, 50% you are showing the possibility, or 100% you are showing the you are giving permission, right? So accordingly you will use these models. In situation के according हम ये models use करेंगे. So someone is saying possibility की बात कर रहे हैं और बहुत weak possibility है, right, for that person, बहुत ही weak possibility है, and the person is saying I might go to the pizza restaurant tonight, very less possibility. So when the person wants to show that very weak possibility, बहुत ही weak possibility show करना चाहते हैं, so ये वो अपने listener को कैसे बताएं, राइट। वो ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि देयर इज वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी दैट आई माइट, तो फिर जब हमने इतना यूज कर लिया वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी, तो फिर माइट तो यूज नहीं करना है, राइट। सो इस टर्म से यूज, वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी को प्लेस पे यूज करने के लिए हमने सिंपली क्या यूज कर लिया, माइट। माइट यूज करके हमने सामने वाले को समझा दिया कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, राइट, कि आई माइट गो टू द पिज्जा रेस्टोरेंट टुनाइट, कि मैं आज पिज्जा रेस्टोरेंट जाऊं, राइट। सो प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन दोनों के लिए यूज होती है, राइट। सेंस निकल रहा है, जितने भी मॉडल वर्ब्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं, सारे ही प्रेजेंट फ्यूचर सिचुएशंस के लिए यूज होते हैं, सेंस में यूज होते हैं। यहाँ पे आप जैसे यूज करेंगे आई में, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे ही आप यूज करेंगे कुड, और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड जैसे ही आपने बोला आई कैन गो टू द पिज्जा रेस्टोरेंट टुनाइट, सो इट मींस दैट द पर्सन इज समवॉट वेरी श्योर, राइट, बहुत श्योर है वो, राइट, almost 100% that I can go to the pizza restaurant tonight. Okay, so this way हम थोड़ा सा ये मॉडल वर्ब्स को समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या यूज करना है। अब देखेंगे, वैसे बोलने में तो कहीं पे भी कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन सब में डिफरेंस है, राइट। तो उस जब डिफरेंस को हम ध्यान में रखेंगे, सो हम मॉडल वर्ब्स को जैसे उनको यूज होना चाहिए हम वैसे यूज करेंगे। बिकॉज अभी आप 100% श्योर हैं, एंड वहां पे आपने यूज कर लिया माइट, सो यू थिंक दैट यू आर 100% श्योर दैट definitely you can go to the restaurant, you have planned everything, right, you have talked to your friends, and there you know that 100% I can go to the restaurant to have pizza. Okay, and there in that situation you are using might in place of can, so your listener will understand in the same. For your listener, if you are using might, for your listener it simply means that no plans, you are not sure, right, there is very less possibility that you might go to the pizza restaurant tonight, right. So उनको तो वैसे ही समझ में आएगा, because in place of can you are using might, so you are giving that idea to your listener, right. So that's why it's important to use proper modal verbs, and modal verbs का रोल यही है, वो आपको यही इसीलिए ही हेल्प करते हैं कि आप अपने जो भी ओपिनियन है, जो भी आइडियाज हैं, वो आप क्लियरली एक्सप्रेस कर सके। इसलिए इनमें ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं, जो परसेंटेज वाइज हम समझ रहे हैं, वो इसलिए हैं यहाँ पे, राइट। दे हेल्प अस अलॉट। परमिशन, किसी को परमिशन दे रहे हैं, सो वहां पे आपने बोल दिया यू माइट यूज माई कंप्यूटर इफ यू आस्क, राइट। सो यहाँ पे जो परमिशन है, वो परमिशन हम बहुत वीकर वीकर एरियाज को लेके दे रहे हैं, राइट। यू आर नॉट वेरी वेरी, यू आर नॉट गिविंग द स्ट्रॉन्ग परमिशन, राइट। यू माइट यूज माई कंप्यूटर, अगर आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, इफ यू आस्क, अगर आप कहें, इफ यू आस्क यू माइट यूज माई कंप्यूटर, राइट। सो वहां पे सामने वाले को ऑप्शन दे रहे हैं, यू माइट, राइट, बहुत माइट, लेस पॉसिबल। अगर इसी प्लेस पे हम बोलते यू कैन यूज माई कंप्यूटर, तो वहां पे आपने उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दे दिया, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, इफ यू आस्क, अगर आप कहें तो यू कैन यूज माई कंप्यूटर, राइट। सो दैट वे यू मे यूज माई कंप्यूटर, आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, राइट। यू कुड यूज माई कंप्यूटर, यू कैन यूज माई कंप्यूटर,
राइट। सो जैसे ही ये कैन कुड माइट यूज होंगे, सामने वाले के लिए आइडिया हो जाएगा कि आप उनको कितनी पॉसिबिलिटी परमिशन की दे रहे हैं, कितनी परसेंट परमिशन आप उनको दे रहे हैं, राइट। सो दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, एडवाइस, रिक्वेस्ट, right, in the same way you can use might. So we can use might in all these areas. And of course, जो माइट है वो पास्ट सिचुएशंस में भी यूज होता है। जब पास्ट सिचुएशंस में यूज होता है तो माइट जो है वो पास्ट फॉर्म मे का पास्ट फॉर्म है। माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म भी है। सो उस सेंस में भी हम माइट को यूज करेंगे। अभी आप उसके एग्जांपल्स देखेंगे दैट इन प्लेस ऑफ मे व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट सिचुएशंस, देयर वी यूज माइट फॉर द पास्ट सिचुएशंस आल्सो, राइट। सो बट अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज पॉइंट्स, यहाँ पे जो ये जो पॉइंट्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, ये जैसे देख रहे हैं डिफरेंट एरियाज में यूज हो रहे हैं। एंड सारे ही जो मॉडल वर्ब्स, अभी जो हमने 4 मॉडल वर्ब्स डिस्कस की, वो सारे हम इंटरचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, लेकिन विथ सम डिफरेंस। सो ये डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। एंड ये ध्यान में रखना है कि जो मे है वो ब्लेसिंग्स में भी यूज हो रहा है, राइट। एक एक्स्ट्रा एरिया है, एक अलग से एरिया है ब्लेसिंग का, विशेष का, जहाँ पे हम मे यूज करते हैं। So you can keep that point in head that yes, we can use may that way also. Okay. All right. I hope this is somewhat clear. And when you make your own sentences, when you do some more examples there, you will understand in a better way, right? So can, could, may, might. Okay. Now, also understand that we also use could for past situations. Okay. We use could for past situations also, right? So अभी तक तो हम could जो था वो different situations में use कर रहे थे। सारी present situation थी, वहाँ पे permission थी, possibility थी, request थी, right? वहाँ पे हम could use कर रहे थे। Now, there is one more area where we use could for past situations, right? Could for past situation. For example, okay, past situation, okay, we can use could. Okay, so we can also use could to talk about something that didn't happen in the past situation. So, for example, someone is asking this question. Someone is asking you this question: why didn't you attend party? Why didn't you attend party? And the person is saying that I couldn't get back from office early. Okay. So now see the question: why didn't you attend my party? Your friend is asking you this question: why didn't you attend my party? Right? And the person is the showing the ability that he couldn't do, right? Talking about that ability that I couldn't get back from ऑफिस अर्ली, मैं ऑफिस से जल्दी वापस नहीं आ पाया या जल्दी वापस नहीं आ सका, राइट? That's why I couldn't attend your party. That's why I couldn't attend your party. And this was the reason मैं आपकी party attend नहीं कर सका. So something the person was not able to do, right? So यहाँ पे ability की, right? The person couldn't do. So for that, we are using couldn't here, could here, right? To talk about something that person was not able to do, right? So that's how we use could in past sentences also when you talk about past situations. अब यहाँ पे हम देखें why didn't you attend my party, यहाँ पे हम simple ये भी use कर सकते हैं I didn't get back from office early. मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आया था. दिस इज ऑल्सो द सेंस कमिंग आउट प्रॉपर, राइट? ये भी प्रॉपर सेंस है कि मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आया. बट देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू यूज couldn't, you talk about something that you were not able to do,
right? So that's why you are using couldn't. I couldn't get back, right? I had some work, okay? बहुत सारे reasons हो सकते हैं, तो मैं नहीं ऐसा कर पाया, नहीं ऐसा मैं कर सका, right? So that's why I couldn't attend your party. इसलिए वो उस I was unable, so उस वजह से that was the reason I couldn't attend your party. Okay, so now you have to see that what are the ways that you want to talk about something. There are so many options where we can talk about same thing in different ways. So you have to see that what kind of sense you want to take out, what kind of sense you want to give to your listener, and with that sense you will use the sentence, you will use grammatical part in that sentence, or you will use the modal verb as per the situation, right? So for example, you are saying sorry, you are talking to your friend, sorry, and you are saying, I couldn't call you yesterday, right? You made this sentence, okay? Why did you make this sentence? What did you think, right? When you made this sentence, sorry, I couldn't call you yesterday, right? So you are showing you are uh, you were not able to do something, right? You were not able to do something, and you maybe there were multiple reasons. You were busy somewhere, or you forgot, and because of those reasons you are saying, I couldn't call you yesterday. Now see the sense. What is the sense coming? Sorry, I couldn't call you yesterday. Sorry, मैं आपको कल call नहीं कर पाया. Okay, नहीं call कर सका. Okay, so you have to think this way, that when you use could for past situations, what is the sense? What you think, right? You think about your ability, and there were some reasons, and because of those reasons, you were not able to do something that you are talking about. Okay, so भी ऐसी चीज थी जो आप नहीं कर पाए, उसके बारे में बात करना चाहते हैं. You will use could, couldn't, and in the same way, you can use all the different sentences. Okay. Sorry, I couldn't call you yesterday. Sorry, मैं आपको कल call नहीं कर पाया. Right. So that way. Okay. I hope you are getting these examples and you are understanding that we use could for such past situations, right? Such past situations we use could. Okay. Now, with all these modal verbs, ये जितने भी modal verbs हम discuss कर रहे हैं, यहाँ पे सारे ही structures हम use कर सकते हैं. सारे ही structures, it means you can make positive sentences, you can make negative sentences, you can ask questions, and you can ask a WH word related questions. So you can make all those sentences with all these modal verbs. So ऐसा नहीं समझना है कि modal verbs से सिर्फ positive sentences ही आ रहे हैं, negative sentences ही आ रहे हैं, questions आ रहे हैं, questions नहीं आ रहा है, या WH word question नहीं आएंगे. नहीं, सारे ही sentences आ सकते हैं. वो depend करेगा कि what do you want to say, what do you want to ask, what are you thinking. So that will decide that how you have to use, right, any of these modal verbs. कैसे use करना है. So उसके ऊपर depend करेगा. So a lot is dependent on what is the situation. You are talking about possibility, permission, probability, or you are talking about past. Okay, so that situation you will keep in your head, and then you will try to use these modal verbs, right? Because these modal verbs are used in different situations, and they can be used as per something that person thinks, that person wants to ask. Okay, with the help of these examples, you can just get the clarity that how to use these modal verbs. Okay, so here we are talking about how to use could in past situation, right? Now, if you see, you can also make the same sentence like this. Sorry, I didn't call you yesterday. Here, you are not talking about that you were not able. You were not able to do something, right? There were some reasons. So couldn't जब आप use नहीं कर रहे हैं, तो वो reasons सब आप देने ही नहीं चाहते.
right? You are simply saying, I didn't call you yesterday. मैंने आपको कॉल नहीं किया कल, and I am sorry for it, right? When you say I couldn't, right, because हम यहाँ पे ability की बात कर रहे हैं, so it means it is very clear for the person कि अरे कोई इनके साथ परेशानी होगी, right, कहीं पे फंस गए होंगे, right, there is possibility that he was busy somewhere, right, that he didn't get time, he forgot, right, lot of possibilities are there, right? So they will understand when you use couldn't, right? कि अच्छा, okay, so with the help of couldn't, you are expressing yourself clearly about the past situation, that there was some reason, right? Just by using couldn't, you gave that reason to your listener. Sorry, I couldn't call you yesterday. But if you say, sorry, I didn't call you yesterday, this sentence is also okay, right? But then there is a difference. What is the difference? You are simply saying, I didn't call you yesterday. So you are not allowing your listener to think about something that was possible for you for not calling your friend back. Okay, so understand that way also, right? कि यहाँ पे हम किस लिए ये बात करते हैं कि ये areas हैं, possibilities, probabilities, request, because that you have to keep in your head, and accordingly you have to use these modal verbs. Okay, I hope it is clear, right? थोड़ा सा modal verbs में स्लो चलेंगे, ये जो एरियाज, जो ये नॉट एरियाज, ये जो कैन, कुड, मे, माइट हैं, ज्यादा यूज होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग है, राइट? सो इसलिए वी आर टेकिंग less examples, and we are trying to understand with the help of less examples that how to use them properly, right? How to use them properly. And when we talk about less examples, it simply means that you have to think about your own examples. जब आप खुद अपने examples सोचेंगे, right, then you will get more clarity. इन एग्जाम्पल से तो क्लैरिटी आएगी, लेकिन जब आप खुद से सोचेंगे वहां पे आपको ज्यादा आइडियाज होंगे, वहां पे और क्लैरिटी आएगी, दैट ओके, यस, इन दिस सिचुएशन, बिकॉज आई एम थिंकिंग लाइक दिस, आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ लाइक दिस, दैट्स व्हाई this modal verb is okay here. That's why I will use could in place of may, or might in place of can. You will understand in a better way when you think of your own sentences, because you know your situation very well, right? You know that particular situation very well that you want to discuss or you want to talk about. So there you will get a clear idea. So that's why it's important that with the help of these examples, just understand and then think of your own examples, right? And with the help of those examples, try to make some sentences. And remember, you can share some sentences in comment section also. That will be super wonderful, right? If you share some examples using can, could, may, might. Think of your own examples and then share there, and then see that what kind of sense you want to take out when you make sentences like that. Okay. Right. I hope this is getting clear. All right. Uh, now, we use could in one more past situation, right? One more past situation में भी हम could use करते हैं, and वहाँ पे थोड़ा सा structure भी different हो जाता है, and structure भी different हो जाता है, और situation भी थोड़ी सी different हो जाती है, right? वो हम next class में करेंगे, and next class में examples तो आपको खुद से करने ही है, सारे ही जो मॉडल वर्ब्स हमने डिस्कस किए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज मॉडल वर्ब्स वी विल ट्राई टू सी सम अदर एग्जांपल्स बाय यूजिंग सम अदर मॉडल वर्ब्स आल्सो, राइट? सी काफी सारी अलग अलग सिचुएशंस में मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं, सो जितना ज्यादा आप अपने तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे टू थिंक, टू मेक सेंटेंसेस, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी. ओके. So, okay, let me stop sharing here. Okay, so we will see the usage of could in one more past situation where we want to just say that something was possible, right? There was possibility of something, but you didn't do that. Okay, so उस situation में हम could को और use कर सकते हैं. उस situation में हम बात कैसे use करेंगे, क्या structure हम follow करेंगे, this we will see in the next class. लेकिन
यहाँ पे ये जो जितने भी आप मॉडल वर्ब्स समझ रहे हैं, राइट, इनको इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद के सेंटेंसेस में यूज करके देखिए, राइट। थिंक, थिंक, जैसे आपने डिफरेंसेस समझे हैं कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, रिक्वेस्ट में कितना परसेंटेज है या परमिशन में कितना परसेंटेज हम यूज कर रहे हैं। सो थिंक दैट वे एंड देन यूज डिफरेंट मॉडल वर्ब्स, ओके, ट्राई टू रिप्लेस them and then see what is the sense coming out if you are using may in place of can, if you are using might in place of could, right? That way you will understand in a better way. So for that, you have to make your own sentences, right? And if you have some friends, if there is someone with you, then you can practice, right? You can ask that person, okay, ask me some question, right? And then when that person asks you that question, for example, if the person asks you, will you go to school tomorrow? Will you go to school tomorrow? Then use modal verb there, right, to answer that question. And that modal verb will be dependent on the possibility, on the probability that you think, right? वो because आपको ही पता है कि आप क्या possibility सोच रहे हैं, right? For example, if you think that 100%, will say, yes, I can go to school tomorrow, right? I may go to school tomorrow. I could go to school tomorrow. I might go to school tomorrow. So you have different options, right? But there is some sort of change. There's some sort of change in terms of possibility, right? Percentage wise, right? So you think from percentage perspective and then make a sentence, answer the question that, right? So that way you can also practice. Okay. So this much for today, and we will continue in the next class. Till then, keep on practicing. And remember, other classes are also going on. So as I say in every class, that spread the message, talk to your friends, talk to other people about these classes, help them with these classes, tell them about these classes. They can also get the benefits from all these classes, and they can also learn and clear their concepts with the help of these classes. All right, everyone. And if you have something to say, then you have comment section. Mention whatever you want to say in the comment section. All right. Bye bye. Take care.